Okay, students. So let's get started with O-level physics, October, November 2022, paper 1, variant 1. This is an MCQ paper. Let's start with it. Okay. The diagram shows three forces acting on a block. The resultant force is 6 Newton towards the right. अच्छा ऐसा ही हो रहा है क्या? You have 11 Newton towards the right and 3 and 2 newtons towards the left. ये भी लेफ्ट साइड पे है, ये भी लेफ्ट साइड पे है. बेटा कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स? यप. Resultant force is equal to 11 minus 3 minus 2. That comes out to be 6 Newton towards the right. That's correct. ठीक है. Currently आपकी resultant force क्या है? 6 Newton towards the right. Perfect. Which additional force produces a resultant force of 3 newtons towards the left? बेटा देखो हमने क्या करना है, हमने 3 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट की रिजल्टेंट फोर्स बनानी है. वी वांट अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट. करंटली हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 6 न्यूटन टूवर्ड्स द राइट. विच फोर्स कैन वी अप्लाई? 3 न्यूटन टू द लेफ्ट. अगर मैं 3 न्यूटन टू द लेफ्ट लगाता हूँ, चलो 3 न्यूटन लगा देते भाई लेफ्ट पे. If you apply 3 Newton to the left, what will your resultant force turn out to be? 11 minus 3 minus 3 minus 2, ये हो जाएगा minus 6 minus 3 Newton. This is still giving you a resultant force of 3 Newton towards the right. Okay. तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी. ए तो नहीं हो सकता, ए को कैंसिल आउट कर दो. बी में एग्जामिनर क्या कह रहा है हमारा शहजादा? एग्जामिनर इज सेइंग दैट अप्लाई अ 9 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. बेटा अगर आप 9 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट अप्लाई करोगे, कैन यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स देन? यप. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू राइट पे 11 लग रही है, -9 -3 -2. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 11 है, 12 हो गया, 14 हो गया, -14 -3 न्यूटन. This minus का sign indicates what? That the force is acting towards the left. What is the magnitude of the force? 3 Newton. बेटा यही तो हमें चाहिए था. We wanted a resultant force of 3 Newton towards the left. We have gotten it. If we apply a 9 Newton force towards the left, B is your answer. Perfect. Velocity is given by the change in displacement divided by the change in time. वेलोसिटी किस तरह निकाली जाती है भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर इन दिस स्टेटमेंट? बेटा हमने बताना है कि कितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इस स्टेटमेंट में. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, displacement एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया. So we have two vector quantities in this equation. C is your answer for question number 2. Let's further move ahead. आगे देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है. Let's see question number 3. A car of mass 1000 kg is traveling down a steep hill. The brakes fail and the driver uses a horizontal sand-filled safety road to stop the car. The car enters the sand at a speed of 10 meters per second and experiences a constant stopping force of this. How far does the car travel in the sand before coming to rest? Okay. देखो बेटा कार का मास क्या है? 1000 kg. कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10. कैन यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कार? 1/2 mv². Perfect. 1/2 into the mass, that is 1000, into the velocity ka square, that is 10 ka square. Can I calculate the kinetic energy? 500 into ये 50,000 joules comes out to be your kinetic energy stored in the car. अब ये kinetic energy किस में convert हो रही है? This kinetic energy is getting converted into what? This kinetic energy is getting converted into work done by the stopping force. काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? 50,000. वर्क डन बाय द स्टॉपिंग फोर्स किस तरह निकालोगे? डू यू हैव द स्टॉपिंग फोर्स? यस. 2500 multiplied by the distance d that you are moving. Can you calculate this answer? 50,000 divided by 2500 is equals to your distance d.
निकालते हैं जरा ये आंसर 50,000 डिवाइडेड बाय 2500. द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 20 meters. बेटा इसका मतलब क्या हुआ? हाउ डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने अज्यूम किया कि जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कार है, that is getting converted into what? Work done by the stopping force. Equated both of them, calculated the value of d. D comes out to be 20 meters. Which part of the distance time graph shows the fastest constant speed? Now, as soon as you see the distance time graph, there is one key point that I reiterate thousand of times. The gradient of distance time graph is equal to speed. बेटा जिस रीजन का हाईएस्ट ग्रेडियंट होगा, the region which has the highest gradient has the fastest constant speed. ठीक है, जिस रीजन का ग्रेडियंट सबसे हाई होगा that has the fastest constant speed. Can you realize region B and region D have a gradient of 0? That means the speed here is 0. Gradient of 0, speed here of 0. बेटा अब ऑप्शन ए और सी में से मुझे बताओ ज्यादा ग्रेडियंट किसका है? ऑप्शन ए और सी में से ज्यादा ग्रेडियंट किसका है? सी का. सी हैज अ ग्रेटर ग्रेडियंट. That means C has a greater speed. C is your answer. Let's see this. A object is accelerating down a straight horizontal track. The acceleration is uniform. Acceleration is uniform का मतलब क्या होता है? Acceleration is constant. Perfect. Which speed time graph represents the motion of the object? अब क्या आपको ये बात याद है? Gradient of speed time graph is equal to what? Acceleration. अब बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दिस मींस व्हाट? ग्रेडियंट will also be constant and positive. If your gradient is constant, what do you draw? You draw a line graph. कौन सा लाइन ग्राफ है? B तो नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता. D is a curve, C is a curve, A is your answer. A line sloping upward, A is your answer. Simple. Question 5 का answer is A. Let's further move ahead beta. What causes the frictional effects experienced by a cyclist to increase? अच्छा जी, फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज होगी? यूजिंग अ लाइटर बाइसाइकिल? नो, फ्रिक्शन लाइटर बाइसाइकिल से तो इंक्रीज नहीं होती. ट्रैवलिंग एट अ ग्रेटर स्पीड, या दैट कैन इंक्रीज फ्रिक्शन. जितना ज्यादा आप स्पीड पर ट्रैवल करोगे उतनी ज्यादा फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करोगे. What is equals to the total stopping distance? Stopping distance किसके इक्वल होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस थिंकिंग डिस्टेंस. ए इज योर आंसर. इजी पीजी. आगे बढ़ते हैं. प्लस ही लिखा हुआ है ना? हाँ, प्लस ही लिखा हुआ है. ठीक है. A planet orbits around the sun. The planet moves in a circular path at constant speed but is accelerating because its direction is changing. In which direction does the resultant force act? बेटा हमेशा याद रखो, whenever you are moving in a circle, your resultant force acts towards the center. The resultant force का option is D. Okay, let's read out question number 9. X is the result of y divided by z. अच्छा जी, y को जब आप z से डिवाइड करोगे, you will get an answer of x. Okay. Now, do you remember this equation? W is equals to mg. अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज कर दूं, वेट डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब आपका y क्या हो गया? वेट. x क्या हो गया? x आपका क्या हो गया? x इज द रिजल्ट. अच्छा, आप इस इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन वन अदर फॉर्मेट. क्या लिख सकते हो? w, अब g को नीचे ले आओ. w डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू मास. बेटा दीज आर द टू वेज जिसमें आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो. लेट्स सी व्हिच वन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. अगर y आपका वेट है, x क्या होना चाहिए? x शुड बी योर मास. या दैट्स करेक्ट. मैं कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर रहा हूँ बेटा? आई एम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन. y की जगह क्या है? वेट. x की जगह क्या है? मास. z की जगह क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. योर आंसर कम्स आउट टू बी ए. इजी. क्वेश्चन 10 पे आ जाओ. The graph shows how the extension of a spring changes with the masses suspended from it when the spring is on planet X and when the spring is on planet Y. अच्छा जी, extension versus mass का ग्राफ given है for planet X and planet Y. अब अगर थोड़ा सा आप गौर करो तो when your mass is 2 kg
At planet Y your extension is 10 kg, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लैनेट वाई पे जब आपका मास 2 kg है, आपकी एक्सटेंशन क्या है बेटा, 10। और प्लैनेट एक्स पे जब आपका मास 2 kg है तो एक्सटेंशन क्या है, 30 सेंटीमीटर। देखो प्लैनेट वाई पे जब आपका मास 2 kg है, आपकी एक्सटेंशन क्या है, 10। प्लैनेट एक्स पे जब आपका मास 2 kg, एक्सटेंशन क्या है, 30। सर सेम मास के लिए एक्सटेंशन कैसे चेंज हो सकती है? देखो एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन फोर्स, और यहाँ पे जो आपकी फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू वेट। इट इज कंप्लीटली पॉसिबल के द वेट of the planet Y mass into 1/3 of gravitational field strength। और यहाँ पे क्या हो, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑन प्लैनेट एक्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एम जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा mg/3। तो बेटा सेम मास पे आपकी डिफरेंट एक्सटेंशन कैसे आ सकती है, इफ योर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट? It could be possible that the gravitational field strength of Y is 1/3 compared to the gravitational field strength of planet X. तो force on planet X क्या हो गई, mg। Force on planet Y क्या हो गई, mg/3। Okay, let's see, is there any option? It is impossible to compare the gravitational field strength. No. The gravitational field strength on planet X is equal to the gravitational field strength on planet Y. No. The gravitational field strength on X is 1/3. No. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्स इज 3 टाइम्स, हाँ ये सही कह रहे हो। जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है एक्स पे वो काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई अ लार्जर फोर्स, द लार्जर एक्सटेंशन। अ यूनिफॉर्म बीम, अच्छा यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है बेटे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेट एक्ट्स इन द मिडल। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेट एक्ट्स इन द middle. It is pivoted at its center. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced. इसका मतलब क्या है, beam equilibrium में है by an upward force F. What is the size of upward force F? You have to calculate the size of upward force F. बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, clockwise movement is equals to anti-clockwise movement. You have to calculate the size of force F. बेटा if you realize इस 60 न्यूटन की फोर्स कहाँ पे बीम को टर्न करेगी, this 60 Newton की force will turn the beam in which direction? In the clockwise direction. 60 into 30, that comes out to be what? 1800 Newton centimeter. अच्छा जी, ये 30 न्यूटन की फोर्स बीम को किस डायरेक्शन में टर्न करेगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 30 न्यूटन into the distance, that is 40, that is 1200 न्यूटन सेंटीमीटर। ये फोर्स F आपको किस डायरेक्शन में टर्न करेगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एफ इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, दैट इज 50 सेंटीमीटर। एफ इंटू 50, 50 एफ। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से आ गए, 50 एफ, 1200 न्यूटन सेंटीमीटर, क्लॉकवाइज इज 1800। So anti-clockwise is equals to clockwise 1200 plus 50 f is equals to clockwise, that is 1800. 50f is equals to what, 1800 minus 1200। 50f is equals to 600। 50 को डिवाइड कर दो, f comes out to be what, 600 divided by 50 is equals to 12 Newton is your force। B is your answer, simple। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। विच ऑब्जेक्ट इज लीस्ट स्टेबल, बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट लीस्ट स्टेबल है, विच हैज द लोएस्ट बेस एरिया, या इसको इस तरह कर, लोएस्ट, अच्छा जी, विच ऑब्जेक्ट इज लीस्ट स्टेबल। बेटा स्टेबिलिटी लीस्ट कैसे होगी, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, बेस एरिया एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपका बेस एरिया नैरो है और आपकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, दैट मीन्स यू आर द मोस्ट unstable object या फिर least stable object। If you analyze option B,
आपका बेस एरिया क्या है, सबसे कम है। आई एम हाईलाइटिंग ऑल द बेस एरियाज इन ब्लू। अगर आप ऑप्शन बी को देखो तो बेस एरिया क्या है, सबसे कम है, सबसे नैरो है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट है। बी इज योर आंसर फॉर द लीस्ट स्टेबल ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। Each tire of a car has an area of 100 centimeter square in contact with the ground. The car has a mass of this. The weight of the car is equally distributed among the four tires. The gravitational field strength is this. What is the pressure exerted on the ground? Can you first of all calculate the weight? mg, mass क्या है 1600, g क्या है बेटा 10, क्या आ गया weight 1600 Newton. Now this is the weight. What will be the force on each tire? Each tire पे force क्या होगी बेटा? What will be the force on each tire? 16,000 divided by 4, that is equals to 4,000 Newton. प्रेशर की क्या वैल्यू आ जाएगी? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है 4,000, एरिया क्या है बेटा 100 cm क्यूब। कैंसिल 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 कैंसिल, योर प्रेशर कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन पर cm स्क्वायर। सी इज योर आंसर। 13 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी। लेट्स फर्दर मूव अहेड। The pressure of some trapped air is varied. The mass and temperature of the air remain constant. Which graph shows how the volume of the air varies with pressure? अच्छा जी, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ हमने बनाना है। If you realize pressure was inversely proportional to volume, but यहाँ पे neither option B neither option C में inverse proportionality का ग्राफ नहीं है। However, if you see, if I plot pressure on the y-axis 1 over V on the x-axis, I will get what? I will get a straight line graph. A is your answer. बेटा अगर x axis पे मैं वॉल्यूम ना प्लॉट करूं, मैं 1 over वॉल्यूम प्लॉट कर दूं, I will get a straight line graph. A is your answer. A constant force F pulls a block of weight W up the slope as shown. Okay. How much work is done by force F in pulling the block up the slope? अच्छा जी, force F कितना वर्क डन कर रही है? The force F is acting in the diagonal direction. You will take the distance in the diagonal direction. Work done क्या हो जाएगा? F into L. B is your answer. Perfect. X and Y are both lamps. 40 volts, 240 volts. Lamp X is more efficient than Y. अच्छा जी, ये इसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्या पता काम आ जाए। Lamp X is more efficient than lamp Y. Which statement correctly compares X and Y? X is more expensive to run, नहीं ये तो more efficient है, तो it will be less expensive to run. X has a lower, no. X produces less light energy, no. X produces less thermal energy or less wasted energy because it is more efficient. 16 का आंसर is D. आखिर में रखा था बिल्कुल इन्होंने आंसर। ओके। The diagram shows a radiator heating the air in a room. हमेशा याद रखो रेडिएटर में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? कन्वेक्शन। भी इज योर आंसर। आई कैन टेक इट विदाउट इवन रीडिंग इट। What is the process of heat transfer that can take place in a vacuum? Only radiation. सिर्फ radiation का process can take place in a vacuum. अच्छा जी। Now, this is excluded from your syllabus of 2026, so I'm not doing this. A piece of iron M is placed in a mixture of ice and water. Its temperature increases from theta 1 to theta 2. How much thermal energy is lost by the iron? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q is equals to mc delta temperature. M into specific heat capacity of iron, theta 1 minus theta 2. 20 का आंसर क्या आ गया भाई? A आ गया। Let's further move ahead. A kilogram of substance has a fixed shape. Thermal energy supplied to the substance weakens the force of attraction between its molecule. What is happening? बेटा देखो, किसी भी चीज का अगर फिक्स शेप होगा तो वो क्या होगा? सॉलिड। क्या थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सब्सटेंस वीकन्स द फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा, दैट्स व्हाई द फोर्सेस आर गेटिंग वीक। डी इज योर आंसर। अ सॉलिड इज गेटिंग मेल्टेड। Which condition produces the greatest rate of evaporation? Evaporation सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर में होती है। सी डी कैंसिल आउट। लार्ज सरफेस एरिया में evaporation सबसे ज्यादा होती है। एंड इफ देयर इज अ
a high wind speed, the evaporation occurs greater 22 का आंसर is A. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? Both longitudinal and transverse wave can travel at the speed of light. No. Both longitudinal and transverse wave have similar wavelength. No. Both longitudinal and transverse wave can travel in a vacuum. No. Both longitudinal and transverse wave can travel in water. Yep, that's correct. Sound waves भी water में travel कर लेती है, light waves भी कर लेती है. So yeah. Okay, a mirror is placed in the path of a ray of light. Through which angle does the direction of the ray of light changes? हमने बताना है कि किस एंगल से डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चेंजेस. बेटा क्या आप एनालाइज कर सकते हो कि पहले आपकी रे ऑफ लाइट किस तरह ट्रैवल कर रही थी? समवट लाइक दिस. Initially your ray of light was traveling like this. Now your ray of light has started to travel like this. अब आपकी रे ऑफ लाइट किस तरह ट्रैवल कर रही है? Somewhat like this. Okay. Now your ray of light is traveling somewhat like this. You have to calculate this angle by which the direction has changed. If this is your angle of incidence 40 degree, आपकी angle of refraction क्या हो जाएगी? 40 degree as well. Can you realize this entire angle is equals to what? ये पूरा का पूरा angle किसके equal है? 180 degree. 180 degree is equals to 40 plus x. X की वैल्यू क्या आ गई भाई? 180 minus 80. X comes out to be 100 degrees. C is your answer. ठीक है. An oscilloscope is used to demonstrate a sound. Which feature of the oscilloscope trace is affected by the quality of the sound? Hmm. Quality of the sound किस चीज को affect करती है? Shape को. C is your answer. अच्छा, now let's see this. क्या लिखा हुआ है? Four floating compasses are placed near a bar magnet. Ignore any effects of the Earth's magnetic field. One compass appears like this. What is the position of the compass? अच्छा जी, position of the compass क्या होगी if it appears like this? देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. प्रोबेबली एट ऑप्शन सी. हो सकता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पॉइंट कर रही हो डाउनवर्ड. सी इज योर आंसर. अच्छा जी, a plastic rod and a cloth are initially uncharged. The rod is then rubbed with the cloth and the cloth becomes positively charged. अच्छा जी, क्लॉथ अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो रॉड क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज. चार्ज ऑन रॉड इज नेगेटिव. सी एंड डी कैंसिल आउट. बेटा अगर आपकी रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए हैं टूवर्ड्स द रॉड. ए इज योर आंसर. Which expression gives the electromotive force work done over charge? D is your answer. A circuit contains two cells and two lamps. The cells are new and are fully charged. In which arrangement of the cell and the lamp do the circuit discharge most quickly? बेटा कौन से अरेंजमेंट में जो सर्किट है वो डिस्चार्ज करेगा मोस्ट क्विकली? जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो ये तो आप कैंसिल कर दो. वेन एवर यू पुट द सेल्स इन पैरेलल दैट मीन्स आपके सेल्स जो है वो लास्ट लॉन्गर करेंगे. We don't want the cells to last longer. So the cells must be in series. Now in series, which option? C or D? Let me show you an example. Let's say this is a 3 volt cell. Let's say this is a 3 volt cell. Total EMF क्या हो जाएगी आपकी? 6. If you have connected the lamps in parallel, this will also get 6 volt. This will also get 6 volts. However, in option D, if this is a 3 volt battery, you have two lamps in series. This will get 3 volt. This will get 3 volts. Where are the lamps consuming the highest voltage? In the parallel combination. So the parallel combination of lamps and the series combination of cells will discharge the cells most quickly. C is your answer. A lamp is connected in series with a battery and a variable resistor. The resistance of the variable resistor is decreased gradually. ठीक है, resistance को हमने gradually decrease कर दिया. Which statement is correct? बेटा अगर आपने वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया, व्हाट विल हैपन? द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस.
As the overall resistance of the circuit decreases, what will happen? Resistance is inversely proportional to current का resistance आपने decrease की, current क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा. A is your answer. Simple. In the circuit shown, all the cells are identical and all the lamps are identical. The switches are closed. In which circuit are both the lamps the brightest? बेटा कौन से circuit में दोनों लैंप जो है वो brightly जलेंगे? If I close this switch, this is positive, this is negative. Can you see that the positive terminal of the battery is connected to the negative terminal of the diode? This cannot be your answer. Let's try out option B. This is positive, this is negative. Can you see the positive terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery? Yeah, the current will flow here. But again, masla क्या है बेटा यहाँ पे? Can you see? Can you humbly realize यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी. Can you realize यहाँ पे क्या हो रहा है? What is happening here? This is a similar problem to what I explained here. अगर आपकी बैटरी 6 volts की है तो 3 volts will be provided here, 3 volts will be provided here. The lamps will light up, but they will be dim. Hence, B will also not be your option. C cannot be your option because the positive terminal is connected to the negative terminal of the diode. Let's analyze option D. My most favorite option, positive, negative. Positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the diode. If the battery is of 6 volts, this lamp will also get 6. This will also get 6. Both will light up brightly. D is your answer. Why is a fuse used in an electrical appliance? To protect the appliance. B is your answer. 32 का answer is B. Obviously, to protect the appliance, we use the fuse. Which statement about a transformer is correct? The changing magnetic field in the transformer induces an EMF in the secondary coil. Perfectly correct. The diagram shows the output from an AC generator displayed on an oscilloscope. The generator is turned at a slower rate. Speed आपने decrease कर दी. बेटा अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे दो चेंजेस होंगे. योर एम्पलीट्यूड या ईएमएफ डिक्रीजेस और सेकंड चेंज क्या होगा? आपकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी. विच डायग्राम शोज द न्यू आउटपुट? न्यू आउटपुट में क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. योर वेव इज ऑल्सो स्प्रेडिंग आउट as the frequency decreases. B is your answer to question number 34. Simple. The sound wave produced by a note is displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope. The time base setting is set at 5 milliseconds per division. अच्छा जी, एक जो बॉक्स है वो 5 मिलीसेकंड के इक्वल है. यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड. क्या आप रियलाइज कर सकते हो एक वेव कितने बॉक्सेस में कवर हो रही है? 4 बॉक्सेस में. ये 5 मिली सेकेंड्स है, ये 5 मिली सेकेंड्स है, 5 मिली सेकेंड्स है, 5 मिली सेकेंड्स है. व्हाट विल बी द टोटल टाइम पीरियड? 5 milliseconds into 4, the total time period is 20 milliseconds. Can you calculate the frequency? 1 divided by time period, 20 into 10 is the power of -3. Can you calculate the frequency? हाँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? यस और नो? निकालो जरा. 1 divided by 20 into 10 is the power of -3. अच्छा जी बच्चों, आपका 35 का आंसर क्या आ गया? 50 हर्ट्ज भी इज योर आंसर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36. परफेक्ट. इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा. अच्छा जी. Three types of radiation emitted by a stable nuclei are helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves and electrons. हीलियम न्यूक्लियर किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंट गामा. इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बीटा पार्टिकल. परफेक्ट. आ गया जो. A beam of electron is fired into a uniform magnetic field as shown. अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज. आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है. You have to calculate the direction of force. You have to identify the direction of force. कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? फ्लेमिंग्स. हाँ जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जब भी आपने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होती है, यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. योर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड. द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इनवर्ड्स. योर नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट. मतलब करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड निकालो. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज करो. करंट टुवर्ड्स द लेफ्ट कर दो.
what will your force come out to be? Downside D is your answer. Now most of you will say sir करंट आपने लेफ्ट की तरफ क्यों बनाया है हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं. Always remember direction of current is opposite to direction of negative charges. हमेशा याद रखना डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इजी पीसी डी इज योर आंसर. 38 पे आ जाओ. Which statement about all three types of radioactive emissions is correct? They are all absorbed by a thin aluminum sheet. They are all no, no. They can all cause ionization of air. D is your answer. 38 का answer is D. What is meant by half-life of a radioactive isotope? I half-life of a radioactive substance. Half the time, nahi. The time taken for the for half the unstable nuclei to decay. C is your answer. Yep. आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. क्वेश्चन 40 में क्या लिखा हुआ है? Radioactive isotope that emit alpha particles, beta particle, and gamma rays are stored in wooden boxes that are lined with a material that prevents most radiation from escaping the box. अच्छा जी, बॉक्स की लाइनिंग है ये, ठीक है. Which material is used for lining? हमने कोई ऐसा मटेरियल लेना है जो तीनों रेडिएशन को स्टॉप कर दे. That material is only lead. So we will be choosing 40 का आंसर as C.